Applicant here is challenging the order malus whereby the maintenance has been awarded malus without calling for the affidavit malus as per the case of Rajneesh Nehru. अच्छी बात है सर। आपको आपका कितनी तनख्वाह है? Malus 3,000 monthly malus. आपकी तनख्वाह 3,000 है। क्या करते हैं आप? Malus होटल में होटल normally- में? होटल में malus जी, वहीं पे रहता हूँ, वहीं पे ब्रेकफास्ट मिलता है, वहीं पे वहीं पे रहते हैं, वहीं ब्रेकफास्ट मिलता है। अच्छा, रजनीश Daily. नेहा में ऐसा कुछ लिखा है क्या कि अगर इफ अ पर्सन इज एन एबल बॉडीड पर्सन then he has a responsibility to maintain his wife and less income cannot be a ground to refuse the compensation. ऐसा कुछ है क्या? but malus that is there malus but I belong to the below poverty line malus. बहुत अच्छी बात है। शादी काहे की थी? एक दिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सर, एक दिन यहाँ पे प्रोटेक्शन की पिटीशन आई। लड़के से पूछा क्या करते हो? सर कुछ नहीं करता हूँ। हमने खारिज कर दी कि हम ऐसे लड़के के साथ महिला के लिए रहने नहीं दे सकते जिसको खुद खाने पीने का ना हो। That is कि आपने किसी महिला की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जब आपके पास खुद खाने पीने को नहीं था? malus that हैं? that is the facts malus that is the other facts malus अदर that फैक्ट, that यस। whether मेरा प्रश्न इस बात का था, किसी एक और जिंदगी को भी आपने अपने साथ लपेटे में ले लिया। because this, सुनिए सुनिए सुनिए, बिना इनकम होते हुए एक और जिंदगी को अपने साथ लपेटे में ले लिया। अब आप कहते हैं उसको इग्नोर कर दो, क्यों कर दें? जबकि एबल बॉडीड पर्सन है अगर आप, तो आपको चाहे जहां से भी करें आपको करना पड़ेगा। दिस इज द लॉ। my prayer is that the affidavits as per the Rajneesh ठीक है, मैं that रजनीश, should be called. ये कौन से अरबपति लोग हैं यार, जो कौन से ये गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं जो एफिडेविट मांगू? आप कहते 3,000, ट्रायल कोर्ट ने 2,000 का तो दिया ही है, और क्या है? 5,000 का दिया सर 5,000 दे दिए, तो 5,000 में क्या होता है सर, आज ये बताइए। सर खुद ही 3,000 का माल है सर वो। हाँ, तो आप तो फिर And he और belongs to the below poverty line to होगा सर, होगा होगा। that I have annexed that अच्छा, वो ऑर्डर कौन है सर? the order is annexure A. आप रजनीश नेहा में ये तो बताइए मेरे को, उसमें नहीं लिखा है क्या? The order impugned is annexure A3 1782. रजनीश नेहा में ये नहीं लिखा है कि अगर आप एबल बॉडीड पर्सन हैं, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर लायबिलिटी। Even if he is not earning malus then also डोंट रेज योर वॉइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ, malus आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ, malus राइट? malus. आप भिखमंगे हो, आप अरबपति हो, आई एम लीस्ट कंसर्न। No, that's what It is your headache that you married a girl without having any income, and you cannot shout at the court. no malus. I am saying Then that when I am saying that, is it not a law that if you are a able-bodied person, then you have to pay? malus that is So that is the end of the matter. that was I was saying malus. तो फिर आप विड्रॉ करो चुपचाप। No, अगर आप मेरी बात को एंडोर्स कर रहे हो तो my prayer is तो आवाज ऊंची करके एंडोर्स करने की क्या जरूरत है? that's what I was saying malus. That's what I was saying. हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, What आवाज ऊंची करनी चाहिए। so relying on this. As I was saying that even if he is not earning, then also he has to pay. That is आप तो मेरी बात को एंडोर्स कर रहे हो ना, हाँ। हो गया। malus para 14 and 15. हाँ, Nothing is evident from the record or even pointed out by the learned counsel of India at the time of hearing. The affidavits were filed by both the parties in terms of judgment of this court in Rajneesh, which was directed to be communicated to all the high courts for further circulation of all the judicial officers. आपने इनकी इनकम के बारे में क्या बोला है? मतलब ये जो प्रेजेंट पिटीशन इंस्टेंट हाँ जी, में सर ये जो प्रेजेंट पिटीशन है सर इस पे पेज 4 पे है सर कि 3,000 रुपए इज गेटिंग एंड सर आपने अपनी पत्नी की इनकम के बारे में क्या बोला है? नावेदा के गांव भुजभुजा में पिताजी की एवं स्वयं की किराने की दुकान चलती है। बीएससी भाई साहब, होटल छोड़ो, यहीं चले जाओ ससुराल। कहाँ लगाए हो यार? 3,000 रुपए में होटल वाले के रहमो करम पे खाना खा रहे हो। मतलब इनफैक्ट पढ़िए, सुनिए सुनिए सुनिए। अनावेदक घमापुर जबलपुर के पास। अच्छा, ये सॉरी, ये उनकी एप्लीकेशन है, मुझे लगा ये आपका एफिडेविट। आपका रिप्लाई क्या है सर? माय रिप्लाई इज मालोच हाँ, A2 मालोच। क्या लिखा आपने? आपने अपनी पत्नी की
इनकम के बारे में क्या लिखा है जिसके कारण कि उनके हलफनामा की आवश्यकता पड़ जाए? हम्म In fact, that is अरे मेरे को पहले फैक्ट्स बताओ ना यार, कहाँ लिखा है कि वो आपकी पत्नी की इनकम है? she is BSc Mallows and working. हैं? She is BSc Mallows. तो पढ़ी Working लिखी in महिला Bank of चाहिए। Baroda. एक पिटीशन, एक केस आया था कि साहब 12वीं बता के 10वीं से शादी करा दी, अब आप कहते हो वो बीएससी है। She is BSc Mallows working in Bank of Baroda. Ma'am. कहाँ लिखा है? तो जब बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी पत्नी काम कर रही तो कहाँ को होटल में लगे 3,000 रुपए के पीछे से? She left the house. तो आप भी चले जाओ ना पीछे पीछे। That is in fact Mallows different. आपके होटल मालिक का एफिडेविट का है? आपके होटल मालिक का एफिडेविट का है? I'll file that Mallows. नहीं, नॉट फाइल, बिकॉज इट हैज आई एम रिवीजन ऑफ 482. I am not going to give you another opportunity to lead evidence, sir. I am only required to judge the order. आपके बारे में उन्होंने साफ लिखा है कि आपके पास और आपके पिताजी के पास 10 एकड़ जमीन, जिसमें और एक किराने की दुकान है, जिसमें 40,000 रुपए मासिक आमदनी और 5 लाख रुपए की सालाना आय होती है। इसका आपने खंडन कहाँ किया, बस इतना बताइए। Mallows ये पैरा 9 में बताइए सर, यह है पैराग्राफ। कि आवेदन की खंडिका क्रमांक 9 के कथन के संबंध में कथन है कि अनावेदक 35,000 रुपए मासिक वेतन नहीं अर्जित करता है। वह एक साधारण सी होटल में काम करता है जिससे उसे इतनी आय प्राप्त हो जाती है कि वह अपने परिवार अनावेदक के पास कोई जमीन नहीं है, आपके पिताजी के पास कोई जमीन नहीं है, आपके पास कोई किराने की दुकान नहीं है, ये सब कहाँ उसी के नीचे लिखा हुआ है? उसी के नीचे लिखा हुआ नहीं लिखा ना, मैं पढ़ तो वह लिया। अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता है। अनावेदक के पास कोई भी जमीन नहीं है। जो भी कथन अनावेदिका ने अंकित किए हैं उस बारे में उन्होंने कोई प्रमाण पेश नहीं किया। बोलो ना कि कुछ नहीं है हमारे पिताजी के पास। अच्छा, दूसरी चीज, अच्छा सर, एक चीज और, एलिगेशन है कि आपने दूसरी शादी की हुई है। that is in fact अरे that सुनो, is settled in 494. सुनो, जवाब दो अभी। अगर आप होटल में अकेले रहते हैं, होटल मालिक के रहमो करम पे खाना खाते हैं, तो वह अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता है, ये क्यों लिखा है? कौन सा परिवार? पत्नी तो चली गई आपकी, फादर है। फादर के पास जमीन नहीं है, किराने की दुकान नहीं है, कहाँ लिखा है? अनावेदक के पास कोई भी जमीन नहीं है। जो भी कथन आप पिताजी का बड़ी मुश्किल से भरण पोषण कर पाते हैं ऐसा लिख रहे हो। आपके खिलाफ आरोप है कि आपने दूसरी शादी की हुई है, और आप यहाँ पे लिख रहे हो कि वह बड़ी मुश्किल से भरण पोषण अपने परिवार का कर रहा है। आपका परिवार तो आपका रिस्पोंडेंट है। कौन सा परिवार आ गया यहाँ पे? मेरे फादर हैं। फादर, और फादर के पास जमीन नहीं है और किराने की दुकान नहीं है, ये कहाँ लिखा है आपने? अनावेदक के पास कोई भी जमीन नहीं है लिखा है मैंने उसमें, लेकिन आपके पिताजी के पास 10 एकड़ जमीन और किराने की दुकान नहीं है, कहाँ लिखा है? जबकि आप बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट 42290/2023, this application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the applicant that the respondent has, ये टेम्पर इंटरिम है कि फाइनल है? 125(2) है मानो है 155 125(2). अच्छा, which is that order? मानो A3 है, पेज नंबर 20. Has filed an application under section 125 of CRPC for grant of maintenance. She also filed an application under section 125(2) of CRPC for grant of interim maintenance. It is submitted by counsel for the petitioner that since the respondent has not filed an affidavit in support of his or her income, which is required as per the provisions of, which as per the dictum of the Supreme Court in the case of Rajneesh versus Reha reported in so and so. Therefore, the trial court should not have awarded the interim maintenance prior to asking for the affidavit.
It is further submitted that the applicant is working as a manager in a hotel and is earning a monthly income of rupees 3,000. He Not a manager, Manoj. ये तो is daily working in a hotel and is hardly earning an income of rupees 3,000 per month. Food is provided by the hotel management and he is staying in the hotel itself. basis. It is further submitted that since the applicant is living below the poverty line, therefore the award of entry maintenance to the tune of rupees 5,000 is on a higher side, and thus it is liable to be set aside. To buttress his contention, the counsel for petitioner applicant has also relied upon the judgment passed by Supreme Court in the case of Aditi alias Mithi versus Jitesh Sharma, decided on 6th of November 2023, passed in Criminal Appeal number 34446/2023, in which it has been held by Supreme Court that the courts are entertaining the applications without compelling the parties to file their affidavits as required in the case of Rajneesh Supra, heard the London Council for. आपने एफिडेविट फाइल किया? नहीं, Manoj, I belong to the below poverty line. आपने Manoj. एफिडेविट वहां पे नीचे कोर्ट में फाइल किया? Manoj, that's what I am. Just if File Manoj's किया? permit, फाइल किया है? I'll just if Manoj's permit, I'll just read one para from this सर judgment. आपने एफिडेविट फाइल I am किया? exempted, Manoj, because I belong to the below poverty. अच्छी बात है, That is अच्छी बात है. It is further submitted by counsel for the applicant that since he belongs to below poverty line, therefore he is exempted from filing an affidavit. कौन सा पैराग्राफ है? 72.9 है, Manoj, page 6 of the judgment, Manoj. 72.9 as held in paragraph 72.9 of Rajneesh versus Neha, Rajneesh Supra, ये 2021 वॉल्यूम 2 SCC 324 है. आपने ये कहाँ लिखा है कि that the respondent is not residing below the poverty line? That is not there in the. Not there. That Consider the submissions made by counsel for the petitioner applicant. The Supreme Court in the case of Rajneesh Supra had held as under 72.9. Therefore, if the parties belong to the economically weaker sections or are living below the poverty line or are casual laborers, the requirement of filing the affidavit would be dispensed with. It is not the case of the applicant that the respondent is not residing below the poverty line. Furthermore, it is not the case of the applicant that a respondent is an earning lady, working and earning lady. Therefore, if the trial court did not insist upon the affidavit, upon the respondent to file an affidavit, then in the light of clause para 72.9 of the judgment passed in the case of Rajneesh Supra, it cannot be said that a material illegality has been committed by the court. Next. So far as the contention of counsel for applicant that he is working in a hotel and is earning rupees 3,000 per month is concerned, and with great difficulty he is somehow managing his family is concerned, it speaks in volumes. One of the allegations against the applicant is that he has remarried during the subsistence of first marriage with the respondent. During the course of arguments, it was submitted by counsel for applicant that the applicant is residing in a hotel and is earning rupees 3,000 per month and food is being provided by the hotel management. Well, let's stop. In paragraph 8 of the application filed by the respondent, she had specifically alleged that the applicant is working as manager in Dwarka Hotel, where he is getting rupees 35,000 per month, and his father has a grocery shop and 10 acres of land from where he is getting 40,000 per month
and rupees 5 lakh per year respectively. The petition applicant has filed his reply to paragraph 8 of the applicant of his reply, which reads as under paragraph 8, page number 15. The applicant has not denied that his father does not have 10 acres of land and a grocery shop in village Bujbuja. There is a specific allegation that the applicant has married. In paragraph 8 of his reply, he has stated that he is earning rupees, he is not earning rupees 35,000 and is working in an ordinary hotel, and he is earning a very meager salary, which is and with great difficulty he is looking after his family. With great difficulty looking after his family को bold और underline कर दीजिएगा. During the course of arguments, it was submitted by counsel for applicant that applicant is residing in the hotel itself and food is being provided by the hotel management. Then what was the meaning of looking after the family as mentioned in paragraph 8 is not clear, but it is an indicative of the fact that the allegation that the applicant has remarried appears to be correct. Faced with such a situation, the counsel, faced with such a situation, the counsel for the applicant submitted that the applicant wanted to communicate that with great difficulty he is looking after his father. When the respondent had specifically mentioned in her application that the father of the applicant is having 10 acres of land and a grocery shop, then that aspect has not been denied by the applicant. If father is having 10 acres of land and a grocery shop in village Bujbuja, then it cannot be said by the applicant that with great difficulty he is looking after his father. Therefore, the explanation given by the counsel for the applicant during the course of arguments appears to be an afterthought which cannot be accepted. Be that whatever it may be. This observation is confined to the present application only and cannot and should not be treated as a final observation, as the application under section 125 of CRPC is still pending. Full stop. Furthermore, it is not the case of the applicant that he is not an able-bodied person. The Supreme Court in the case of Rajneesh Supra has held as under. Thus, if a person is an able-bodied person, if the husband is an able-bodied person, then he cannot deny to pay the maintenance amount only on the ground that he is earning a very meager, his salary is that he is having a very meager salary. It is his स्टैट्यूटरी. अब मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ. और मैं ठीक कर दूंगा. मैं पढ़ने से पहले देखता हूँ भाई, टाइपिंग एरर और अपने एरर दोनों ठीक करता हूँ. मैंने लिखा है इट इज नॉट योर केस दैट यू आर नॉट एन एबल बॉडीड पर्सन. पूरा नेगेटिव सेंस में है वो ऑर्डर. मैंने ये नहीं कहा कि दैट यू हैव क्लेम दैट यू आर नॉट एन एबल बॉडीड. पुलिस स्टाफ. अब यही प्रॉब्लम यही होती है कि कंटिन्यूटी टूट जाती है. सॉरी, क्या हुआ मैडम? पुलिस स्टाफ. इफ द एप्लीकेंट नहीं, पुलिस स्टाफ. Furthermore, the applicant has not filed the affidavit of the owner of the hotel in which he is working. He has the full stop. Thus, the contention of the applicant that his monthly income is not 35,000 has not been supported by any affidavit of the owner of the hotel or the books of accounts of the hotel, be that whatever it may be. The trial court has awarded an interim maintenance of rupees 5,000 per month. Police staff. Looking to the price index, the price of the daily needs, goods of daily needs, it cannot be said that the maintenance amount of rupees 5,000 per month is on a higher side. Considering the totality of the facts and circumstances of the case, this court is of considered opinion that no case is made out of warranting interference. The application fails and is hereby dismissed. The para 8 which Malus has relied, Malus, that has been denied in totality, Malus. And yes. Sir, I have passed the order.
before starting dictation, I had read out to the paragraph to you. I had invited your submissions. Once after receiving your reply, I have dictated the order. If you are not satisfied, you have a remedy. Right? You cannot say that I have given some finding without giving you an opportunity to you. But you cannot compel me to pass an order as per your dictations. आपको मैं सुनना चाहता हूं, मैंने सुना. आपको मौका देना चाहिए था, मैंने दिया. बाकी आप लोग के कुछ साथी कहते हैं मौका देते हो तो बड़ा डर लगता है. हाँ, कि सब पूछते हैं बड़ा डर लगता है. ऑब्जर्वेशन तो वो तो हम नहीं ऑब्जर्वेशन मैंने साफ कर दिया कि इट इज प्योरली कन्फाइंड टू दिस स्टेज ओनली. वो सेकंड मैरिज प्योरली कन्फाइंड टू दिस स्टेज ओनली. मैंने लिखा नहीं है क्या? लिखा है. हमारे जज साहब को पता है कि हाई कोर्ट ने क्या लिखा है. आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, आप लोग की वो बात है. मैं किसी भी एडवोकेट को या किसी भी पक्षकार को क्या बोलना क्या नहीं बोलना नहीं बता सकता. और मेरे जज को क्या लिखना है वो मैंने लिख दिया. आप ये नहीं लिखेंगे कि चूंकि हाई कोर्ट ने कहा इसलिए मैं मानता हूं. नहीं, ये नहीं लिख सकते. इतना मैंने क्लियर लिख दिया. आई कैन कंट्रोल माई जुडिशरी ना. दैट आई हैव डन विदाउट योर सेइंग. इससे ज्यादा और बैलेंस्ड ऑर्डर बाय प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द लिटिगेशन और क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? सेकंड मैरिज विल बी प्रूव्ड इन 494 केस. अरे सर, सब कुछ दिख रहा है. मेरा परिवार कहाँ का परिवार सर? आपके पिता के पास प्रॉपर्टी आप बता नहीं रहे हैं. That is not proved, Malad, in fact. And I have मैंने लिख दिया, I have given my finding. Fine. मैडम वो भी लाइन काट दीजिए कि it is confined to this stage only. हटा दीजिए मैडम, प्लीज सीरियसली हटा दीजिए उसको. सॉरी. अगर आप लोग के फेवर की फाइंडिंग्स देने के बावजूद भी आप लोग को संतुष्टि नहीं है और आपको वही ऑर्डर चाहिए जो आप चाहते हैं, तो आप लोग सीधा खड़े होकर डिक्टेशन दो. हम अपने स्टेनो से बोल देंगे जो साहब डिक्टेशन देंगे वही कर लो. हमारी कोई जरूरत नहीं है. चल 147